heart. Come to me and slow from me towards me, yeah. I'm following you, taking me up into the sky. Hoover Dam in this pretty beautiful sunny weather in the month of March. अभी मार्च में ऐसा मौसम होता नहीं है यहाँ पे, यूजुअली बर्फ़ गिरती रहती है। तो इतना अच्छा मौसम हुआ है, सभी लोग बाहर निकले हुए हैं। एक्चुअली आज वीकडे ही है वैसे तो, बट देखते हैं हूवर डैम पर जाकर रिजर्वेयर पार्क में कितने लोग हमें वहाँ पर जाकर मिलते हैं। Let's see guys, I'm about to reach there in 10 minutes driving. Stay tuned with the video and please keep watching until end to see the surprises of the Hoover Dam and Hoover Reservoir Park. Thank you. दोस्तों मैं हूवर डैम रिजर्वेयर पार्क की पार्किंग में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पार्किंग स्पेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ऑल अराउंड। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया हुआ है। यहाँ पे अराउंड आपको 50-60 कार्स की पार्किंग का स्पेस इजीली मिल जाता है। आप यहाँ पर 270 ईस्ट लेके आएँ और डिपेंड्स करता है कि आप कौन से रूट से आ रहे हैं। और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा वॉक थ्रू करते हुए डैम के पास नीचे जो है डैम है, और मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊँगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। स्टे ट्यून। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही शांत नज़ारा है यहाँ पे। कभी भी आपकी छुट्टी हो यहाँ पर समय बिताने के लिए आएँ। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ के बाद से हमारा वॉकिंग ट्रेल शुरू हो जाता है हूवर डैम की तरफ। और यहाँ से आगे गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, मे बी अलाउ होंगी तो वो गाड़ियाँ जो इस पार्क से रिलेटेड काम करने वालों की, ऑफिशियल्स की होती होंगी। बाकी टूरिस्ट के लिए ये पार्किंग स्पॉट है और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं एंड देन दे कैन गो बाय वॉक। एंड यहाँ पर रेस्टिंग के लिए छोटी छोटी पिकनिक टेबल्स भी बनाई हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं। यहाँ से मैं आपको नीचे ले चलता हूँ वॉक करते हुए डैम की तरफ, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। जैसा कि मैं आपको एक दूर से सिनेमैटिक शॉट दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा जूम करके। कुछ लोग यहाँ पे आते हुए, थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया बट फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर हैं इस डैम का इस इतने प्रिटी वेदर में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सिनेमैटिक शॉट यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे दिन भर की दौड़ भाग धूप से कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। जो भी मेरे कोलंबस के साथी मुझे देख रहे हैं, बाकी तो सभी लोग मुझे पूरे वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा।
हम अपनी फैमिली के साथ आए पिकनिक मनाने के लिए। सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम आपको यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा विद अ नाइस सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ। वैसे तो कोई नॉर्मल टूरिस्ट की व्हीकल्स आते नहीं है, कोई आता भी होगा तो यहाँ पे आप नो पार्किंग जोन है, हम देख सकते हैं। So this park is called Cornell Park because this is dedicated in honor of C.B. Brownie Cornell, जिन्होंने 1880 तक 1880 में उनका बर्थ हुआ था और 1960 तक 61 तक वो रहे। उन्होंने अपनी who devoted his life to the development and construction of water supply facilities. His foresight and outstanding abilities in his chosen field are everywhere evident in the Columbus water system. So basically कहा जाए तो इन्होंने बड़ी मेहनत करी और इन्होंने आगे फ्यूचर के लिए सोचा और इस डैम का प्रोवाइड किया। तो बेसिकली कोलंबस की पूरी वाटर सप्लाई इसी डैम से होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है कोलंबस की वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए। और हम यहाँ पर अभी वॉक करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने थोड़े से हर्डल्स लगाए हैं ताकि कोई घुस भी जाए तो यहाँ पे आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। इस यहाँ पर लिखा है कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तभी आप नहीं मतलब कोई भी इमरजेंसी व्हीकल पुलिस एम्बुलेंस वही लोग इस ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप स्नो बोर्डिंग नहीं कर सकते और डाउन हिल स्कीइंग भी नहीं कर सकते because of safety measures of the dam and for the people as well. That's the dam right behind me. I'm gonna go walk over and show you guys all of the beautiful cinematic views of this dam and surrounding the area of this park in this beautiful sunny weather. इस डैम के आजू बाजू में बहुत ही सारा खाली स्पेस है। एज यू कैन सी मे बी यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स या गेम एक्टिविटी करते होंगे। एज यू कैन सी all empty area, and this is the beautiful lake, Hoover Lake, जिस पर ये डैम बना हुआ है। वाह, बहुत ही प्यारी हवा। This beautiful weather. This lake is ending in this woods. I think लोग यहाँ पे फिशिंग भी करते होंगे। Friends, you can see this signboard keep off grass slope because यहाँ पे बहुत ही डाउन हिल स्लोप है। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर गलती से गया तो सीधा नीचे ही जाकर रुकूंगा। इट्स अ वेरी डाउन हिल स्लोप। आई थिंक अगर स्नो में आएंगे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी स्लाइडिंग हो पाएगी, बट आई थिंक उन्होंने बोला हुआ कि स्नो में भी आप यहाँ पे स्लाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट सेफ। ये डैम के नीचे का नज़ारा है। नदी बहुत ही स्लो वेव में जाते हुए। कुछ लोग यहाँ पर नीचे हैं जो कि
आई थिंक दे केम फॉर द फिशिंग। और और हाँ, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी बात है, फिशिंग के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि वॉलमार्ट वगैरह और ड्रग स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर से इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। सो दिस इज द अदर साइड ऑफ द डैम। आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ नज़ारा। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर रात में कोई लीगल एक्टिविटी ना हो उसके लिए भी इन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए हैं। सो प्लीज not to try to do anything bad over here, otherwise you're gonna caught and get into the trouble. फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं डैम का पीछे का लेक का नज़ारा। और यहाँ पर मैं भी जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पीछे जस्ट पीछे ऑब्जर्वेटरी डेक है। यहाँ से आप डैम का नज़ारा ले सकते हैं, वाटर फ्लो देख सकते हैं। और लेट्स सी व्हाट्स ओवर हियर। दिस इज लाइक द ऑब्जर्वेटरी डेक। नाउ द विंड इज सो हाई राइट नाउ ओवर हियर। और डैम के बाजू में खड़ा होकर बहुत ही चिल वाला फील आ रहा है। और आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग नीचे जाने का रास्ता ये सीढ़ियों से है, यहाँ से लोग जाते हैं। मैं इस टाइम ऑब्जर्वेटरी डेक पे खड़ा हूँ, तो यू कैन सी द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम हियर। दिस इज द ऑल डैम पार्ट। तो उन्होंने पानी के फ्लो को रोका हुआ है, धीरे धीरे पानी यहाँ से गिर रहा है। लिटिल बिट स्केरी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही डैम के डोर्स हैं। जब कभी खोला जाता है या बंद किया जाता है पानी, तो यही यहाँ से चोरी किया जाता है। आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ। Very beautiful scene of this dam, and I'm feeling so relaxing and calm after coming over to this observatory deck of this Hoover Dam, which is located in the Westerville, Ohio. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वार्निंग भी दी है, restricted area, drowning hazard। आप यहाँ पे डूब भी सकते हैं। So basically, just be careful while you are here. And you can see the height of this dam. Let me take you to the other side of the lake. So ये जो लेक का दूसरा एरिया है, जहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हुआ है, और इस डैम के थ्रू ये पूरा पानी नीचे जाता है, कि आपने देखी है। ऑलमोस्ट 84 मीटर की हाइट है, तो आप देख सकते हैं।
Sometimes people came here for the bird watching, fishing, and they have their own private boats. So इसकी लगभग गहराई जो है 900 मीटर है इस डैम की, और ये कम से कम 5 मील में फैली हुई ये लेक है। सारा डिस्क्रिप्शन हम आपको इसका लिंक बायो में दे देंगे, नीचे लिंक में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस टाइम बहुत ही विंडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पे यहाँ पर लिखा भी है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कीप आउट, बिकॉज यहाँ पे गहराई जो है कम से कम 900 फीट की गहराई है इस डैम की, यहाँ पे इस पॉइंट पे। और यही वो अदर साइड है जहाँ से हम खड़े होके मैं ऑब्जर्वेटरी डेक से आपको दिखा रहा था। आप देख सकते हैं तो पानी स्लो मोशन में गिर रहा है। ये है सामने ऑब्जर्वेटरी डेक, यहाँ से हमने पूरे डैम का व्यू लिया, कैप्चर किया। ब्यूटीफुल लेक, ब्यूटीफुल वेदर, everything is beautiful over here. Come here, relax your mind, came out of your every day's running busy life, and get over here, relax and chill down. Sometime give relax to your eyes to see this green weather, beautiful water, so pretty. This is the address of the Hoover Dam, 7701 Sunbury Road, Westerville, Ohio. As you can see, what are all facilities are available here. Camping is prohibited, fires are prohibited, swimming and wading are prohibited, alcohol positions, so many things is prohibited. Fishing, you can do the fishing. Boating, you can do that with limited of 8 feet or 222 feet, and it's written all the information over here. You have to just come over here and go through the internet for all the information about the Hoover Dam, recreational park, and all the maps. And this is the park information and events. So this is another side of the park. Then we go enter from this side, and my car is parked the other side of the park. So this is like a clean Ohio trail fun. So this is like a trail, people can go for a walking trail over here. They can come here with their dogs to give a walk around for the picnic with the kids. As you can see, many of the people are out with their dogs.
this is of my Apple iPhone. Pretty zoom, cover pretty so many things. Danger zone. No swimming, no wading. नीचे आया हूँ लेक की साइड में। अब मैं डैम की अदर साइड जाने वाला हूँ। ये तो मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा लग रहा है नज़ारा। अगर कुछ लोग गए होंगे वहाँ पे तो उनको पता होगा मुंबई का मरीन ड्राइव भी कुछ इसी टाइप का ही दिखता है। वहाँ बड़े बड़े इस तरह के पत्थर रखे होते हैं बीच साइड में। चलो आपको डैम की दूसरी तरफ लेके चलते हैं जहाँ से एक्चुअल डैम का पानी गिर रहा है नीचे। As you can see, those are the water gates. 1, 2, 3, 4. Okay, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 or 9, something like that. Roundabouts I can see from here. Those are the water gates. इनको बंद करना होता तो पूरा पानी रोक सकते हैं यहाँ से पानी को फ्लो होने से। मैंने भी नीचे रेनबो देखा था। मैं आपको नीचे रेनबो जाकर दिखाऊंगा। Let's see. Go and watch the rainbow. This is the full wide angle view. अभी इस डैम के बारे में आपको बताएंगे। This Hoover Dam and Reservoir are named in the honor of Clarence B. Hoover and Charles P. Hoover. जैसा कि मैंने आपको एंट्रेंस के टाइम पे बताया था। और बाकी इस डैम की जो डिस्क्रिप्शन है, कितनी कैपेसिटी है, कितना इसमें सामान लगा, सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप इजीली रीड कर सकते हैं और मैं आपके लिए रीड कर सकता हूँ। Earth dam and concrete spillway and control works. Quantity of concrete approx 180,000 cubic yards. Quantity of earth fill approximate 600,000 cubic yards. Length of spillway 680 feet. Length of इस डैम की जो लेंथ है वो 2583 फीट है। मैक्सिमम हाइट ऑफ डैम, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि अप्रोक्सीमेट ये 90 फीट ऊंचा है। जो एक्चुअल इसकी अबव स्ट्रीम बेड है वो है 94 फीट है। और 890 फीट ये जो है मेन सी लेवल से ऊपर है। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजर्वेयर। तो आपका जो रिजर्वेयर का जो लेंथ ऑफ पूल है, जो कि रिजर्वेयर पूरा जो फैला हुआ है वो अप्रोक्सीमेट 8.5 माइल में फैला हुआ है, जो कि 2825 एकर्स है। ओके एंड ये ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं मोर देन 190 स्क्वायर माइल से फैला हुआ है। और इसमें अराउंड लाइक मोर देन 60,342 आप यहाँ पे देख सकते हैं। गिनने को भी नहीं आ रहा है। करीब 19 अरब गैलन पानी आ सकता है। ओह माय गॉड। की दूसरी साइड पे उसके बाद हम ये वीडियो को क्लोज करेंगे। इट्स टाइम टू गो, मूव ऑन। यहाँ से शायद वो रेनबो वाला नज़ारा दिखेगा। शायद से दिख रहा है अभी भी, और मैं उधर जाने की कोशिश मैं ही करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ से डैम का नज़ारा। ओह माय गॉड, यही वाटर है। रेनबो दिख रहा है, कहीं तरह से दिख रहा है। जो स्टेप्स हैं, it will take you downwards towards this park where people coming to walk, jogging, their dog walk.
डैम को हमने पीछे छोड़ दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं 8-9 गेट्स हैं डैम के। दिस इज आवर हूवर डैम एट द एंड। दिस इज द साइड जहाँ पे पानी गिर रहा था। आपको मैं दिखा रहा था ऊपर से। मैं दिखाता हूँ कितनी दूर से आपको दिखा रहा था। दोस्तों ये है वो सामने ऑब्जर्वेटरी डेक जो मैं आपको दिखा रहा था। Friends, I'm at the base of the dam. As you can see, all 8 gates of the dam, water dam. You can see from here, and this is the empty space when they're gonna open all the gates fully open. So I think this area is gonna be fully flooded. I think this is the again place for the parking or some event. If something gonna be happen over here, the event or something fun. Let's go back to finishing our video. We almost cover up entire dam in this beautiful weather. Now ready to go back. Finally चढ़ गया मैं डैम के ऊपर। थक गया। ऐसा लगता है राज 1 की मूवी की शूटिंग इन्हीं जंगलों में हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं वेरी डेंस वुड्स ओवर हियर। यहाँ पे रात को हिरन भी आते होंगे, क्या पता दिन में भी आते होंगे। आप देख सकते हैं बेंचेस बनाई हुई हैं बैठने के लिए, खाने के लिए, लोग रिलैक्स करने के लिए, रेस्टिंग करने के लिए। सो तो दिखाते हैं पूरा व्यू इस वुड्स का। मैं ज़्यादा अंदर डीप तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी जाना होगा। So friends, thanks for watching my video on Hoover Dam, which is located on the Westerville, on the Hoover Reservoir, and the northeast side of the Columbus, Ohio. और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं। If you like the video, please like it, comment it, share and subscribe my YouTube channel for more interesting video about the Columbus and nearby places or all over around the US. Whenever I go anywhere, I'll take you guys with me with no cost. You have just subscribed the my YouTube channel. You have to hit the bell icon so you can get all the notifications of all my videos. And I have an Instagram as well. You can follow me there for new updates of my upcoming videos. So I'm gonna close this video right now. This was a very nice and good weather over here. This is very sunny today in this starting of the March, which is unusual. But in Columbus, everything is possible, and we are expecting in next couple of weeks snow again. So I really enjoyed my day off. I'm gonna give you a pretty quick look about these woods and
Have a good day. Sayonara. Keep watching my videos. Thank you.